Hello class 10 students. Today we are going to start chapter 9, that is some application of trigonometry. This chapter some of the students feel very difficult, but for you only we made it very easy. We have used some visualization to make you understand each and every concept of this trigonometry. So without any delay, let's start it. So first of all, let's see the introduction of it. Here you can see Mount Everest. What is its height? So, can you imagine it? कि इसकी height कितनी होगी? No, right? Here, this is from bottom to upside. यहाँ नीचे bottom से यहाँ तक की height आपको find out करनी है. We don't know. So, question is how can we measure it? हम इसको कैसे find out कर सकते हैं? इज देयर एनी डिवाइस? क्या कोई डिवाइस लेना पड़ेगा? कोई इंची टेप लेना पड़ेगा या कोई और डिवाइस होगा जिसको आप बॉटम से लेकर अब तक लेके जाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स इम्पॉसिबल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप. आप किसी भी टेप से इसको मेजर नहीं कर सकते, राइट? हियर रिवर, व्हाट इज इट्स विड्थ? कोई भी अगर आपको कोई भी रिवर दिखाई दे रही है तो क्या आप उसकी विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हो? फ्रॉम दिस टू दिस इट इज डिफिकल्ट एंड इम्प्रैक्टिकल टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप. किसी भी टेप की हेल्प से हम इसको मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज दिस स्टार, एफिल टावर. इन दिस एफिल टावर, if you see that, what is its height? Can you find out? From bottom to now, upside? बहुत मुश्किल होगा. It is very difficult to measure the height of it. How can we measure it? तो हम उसको कैसे measure कर सकते हैं? With the measuring tape? Again, it is very difficult. So, we have three cases now. अब हमारे पास तीन cases हैं. First is the height of a mountain. Next, we have a width of a river, and third, that is the height of a Eiffel Tower. Such height and distances can be found. ऐसे distances और height हम measure कर सकते हैं. कैसे measure कर सकते हैं? By applying trigonometry. हमारी trigonometry help करती है हमारे को किस चीज के लिए? Height और distances को measure करने के लिए, right? We need to learn few important terms here. First is line of sight, horizontal line, angle of elevation, angle of depression. ये चार पॉइंट हम अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, थर्ड इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड फोर्थ दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. हाय, आई एम राज. I'm going to explain you all the important terms. So, let's understand it. First of all, let's understand what is line of sight. Here, this Raj is here. He is observing the cow. This cow. Now, we call it observer. And this object which this boy is observing, that is called object. इसको क्या बोलते हैं आप? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एक क्या है ऑब्जर्वर और दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जर्व करते हैं, राइट? नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस काउ, व्हाट वी सी, दिस इज कॉल्ड line of sight. This imaginary line is connecting the eye of the observer and the object. हमने एक लाइन को ड्रॉ किया. कहां से? फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम राज टू काउ. This line is called line of sight. इसको ही हम line of sight बोलते हैं. You can understand it, learn it also. Because as you see कि आपके जो case based questions हैं आजकल इसी टाइप के आ रहे हैं. So this imaginary line is connecting the eye of observer and the object. ये imaginary line जो होती है किसी भी observer की eye से object तक जो connect करे, right? उस imaginary line को क्या बोलते हैं? line of sight बोलते हैं. Now, here, let us see some more example. Let us see here, observe the door. अब हम क्या करते हैं? Door को observe करते हैं. Door of the tree house. This is, so now,
This is observer, object. So this line, imaginary line that we call here, क्या बोलेंगे इसको? Line of sight. Absolutely right, friends. Now next we are observing now flower. अब हम flowers को देखते हैं. These are the flowers. Observer to the object. तो इसको अब हमने क्या बोला? We called it line of sight. Absolutely right. Clear? तो आपने तीन चीज ऑब्जेक्ट करी, ऑब्जर्व करी. एक है काउ, डोर और साथ में हमारा क्या था? फ्लावर. I want the apple. Now I want that apple. So observer with the object. This line we called it, क्या बोलेंगे इसको? Line of sight. These all objects when we observe we call them line of sight. हम उनको क्या बोलते हैं? Line of sight बोलते हैं. Now let's understand angle of elevation here. क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन? कब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, एलिवेट होना, राइट? सो दिस इज ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट. द लाइन पासिंग थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड इट इज पैरेलल टू द ग्राउंड. जब ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल होती है, राइट? दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जो लाइन ग्राउंड के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. नाउ हियर आई एम ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ ट्री. मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? ट्री के बिल्कुल टॉप पे एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, राइट? सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. द अनदर लाइन which is from observer to object, it is called line of sight. One is parallel line. ये जो हमारी लाइन है वो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन. दिस इज पैरेलल लाइन एंड दिस लाइन इज लाइन ऑफ साइट, राइट? तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज दिस लाइन ऑफ साइट मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. बिल्कुल ये एक एंगल बनाती है. हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट क्या करेगी? एक एंगल बनाएगी. दिस इज आवर एंगल. वी से दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. हम इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, थीटा. रिमेंबर एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. हम कहते हैं कि जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड angle of depression here. Here this is observer. Now this is horizontal line as it is parallel to the ground. Now I am observing the flower on the ground. So here this observer, object, and then when he observe this object, this is line of sight. So horizontal line with the line of sight, that is making an angle. ये एक एंगल बनाएगा. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के साथ एक एंगल बना रही है. इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अ फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी आपकी लाइन थी उससे नीचे हमने देखा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो है, राइट? तो बिलो जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? वो एंगल जो बनाएगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. वी कॉल्ड इट एंगल ऑफ डिप्रेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. दूसरा जो बनता है वो क्या बनता है आपका? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक एलिवेशन, एक डिप्रेशन. सो लेट अस रिवाइज ऑल फोर टर्म्स. दीज फोर टर्म्स, हाउ वी से? फर्स्ट, द लाइन विच इज पैरेलल, वी कॉल्ड इट, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन. वेरी गुड. द अनदर वन, here I am observing the eagle of the sky. So this observer with the object making an angle, line of sight, angle is angle of elevation. Downside, it is here, downside we called it line of sight. Angle which is formed, it is angle of depression, right friends? So these are the four definitions. You need to learn it, right, and understand it carefully. With this we will continue here. Point to remember while drawing the figures to solve the problem.
all the height of objects such as star, trees, building, they shall be considered as a line segment. वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड के. अब ट्री है तो ट्री तो ऐसे भी हो सकता है, राइट? बट हम हमेशा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कंसिडर करेंगे वो क्या करेगा, ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर होगा, राइट? बिल्डिंग ऑल्सो star this line segment making an angle 90 डिग्री. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो दिस इज अ टार एंड दिस इज ग्राउंड. तो ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, राइट? नाउ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद द ट्री, राइट? ट्री के साथ ग्राउंड का जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा. This is here building with this is also making an angle of 90 degree. Now height of observer is neglected if it is not given, right? अगर कहीं पर भी ये given है कि one object it is making an angle of 45 degree, so don't consider कि वहां पर height होगी object की. We consider it as neglect, मतलब zero height, right? It is not given, प्रॉब्लम में गिवन नहीं है. गिवन होगी तो कंसिडर करनी पड़ेगी. वी कंसिडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. हम क्या मानेंगे उसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? नाउ हियर लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. So, a circus artist is climbing a 20-meter long rope. तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, एक पोल कंसिडर किया, राइट? नाउ 20-meter long rope tied from कहां से कहां तक स्ट्रेच गई, टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. 20 मीटर टॉप टू द पोल. देखो ये क्या है, पोल का टॉप है, राइट? ये क्या है, हमारे ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है. तो यहां से ये सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंब किया 20 मीटर, राइट? ये चढ़ता है उसके ऊपर. नाउ विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप टू दिस. फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल. आपको बताना है कि पोल की हाइट कितनी होगी. इफ द एंगल मेड बाय द रॉप, रॉप के साथ कितना एंगल है, it is 30 degree, right? So now this is our question. Again observe it. This is the triangle which is formed, right? AB हमें find out करना है. 20 मीटर हमें रॉप गिवन है. एंगल रॉप जो है वो ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री. So this is 30 now. Now find it. Length of the rope we consider 20 meter. Height of a pole we consider h meter. Now observe angle C. Angle C it's given here. It's given 30 डिग्री. तो एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर मानते हैं. हाइपोटेन्यूज हमारा क्या रहेगा, AC. दो वैल्यूज है, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर और दूसरा हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या मिलता है हमें, रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज रिमाइंडर्स ऑफ साइन. हम क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन को लेंगे, राइट? क्यों, क्योंकि आपने अपोजिट साइड को लिया और साथ में हाइपोटेन्यूज को. इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ABC. वी ऑब्जर्व sin 30. इट इज परपेंडिकुलर विच इज AB डिवाइड बाय हियर दैट इज AC. सो AB बाय AC हम फाइंड करते हैं sin 30. sin 30 की वैल्यू 1/2. AB की वैल्यू है h डिवाइड बाय AC की वैल्यू है 20. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2h is equal to 20, h equal to 20/2 which is equals to 10 meter, right? तो हाइट ऑफ पोल हमें समझ में आती है कितनी होगी, 10 मीटर. नाउ a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the ground. These all questions, they are the NCERT questions, right? So first I have taken the simplest one and then we will move to the difficulty level. Now here difficult one. The inclination of the string with the ground that is making an angle of 60 degree. Find the length of a string. So here a kite is flying at height of 60 meter. हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक काइट है, राइट? इस काइट की हाइट को हमने कितना कंसिडर किया है, 60 मीटर, राइट?
from the ground. Now string attached to the kite is temporarily tied to the ground. Inclination जो बना रहा है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री. This is 60. आपको क्या find out करना है length of string, right? So this consider ABC. यहाँ पर consider करते हैं ये पूरी triangle. This is 60 degree, right? AB क्या represent करता है distance of the kite from the ground. Now AB 60. AC जो आपको लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की उसको AC कंसिडर करते हैं. एंगल जो गिवन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री. एंगल ACB हमारा है 60. तो एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है वो है हमारी AB. जो फाइंड करना है वो हाइपोटेन्यूज. तो रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज में डिफाइन करता है साइन का. साइन 60 के वैल्यू sin 60 divided by AB by AC perpendicular by hypotenuse. Sin 60 is root 3 by 2. AB we put here 60. AC it's as it is. Now AC we can find the 60 we take. See here 2 we are taking here that side and root 3 downside. Right? AC is equal. You can write this also. Root 3 AC is equal to 120 60 into 2. AC की वैल्यू क्या बनेगी आपकी 120 डिवाइड बाय कितना अंडर रूट 3, राइट? सो इट इज हियर 120 बाय रूट 3. नाउ लेट अस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अब हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, राइट? सो हियर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड 120 रूट 3 डिवाइड बाय 3 कैंसिल आउट 40. आंसर इज 40 रूट 3. We can put the value of root 3 1.73. 40 into 1.73 that is 69.2. Now length of string it's found 69.2 meter. Now question is a contractor plans to install 2 slides. एक contractor ने क्या किया 2 slides बनाए, right? 2 slide किस तरह से है for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5, right? And it is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in it? So here we consider 2 slides. One that is below the age of 5 years, another one that is for the elder children. So now first, for the children below the age of 5, the top of a height that is given here 1.5. It is inclined angle of 30 degree. Consider करते हैं ये angle कितने का होगा 30 degree. Whereas for the elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined an angle of 60 degree, right? So this angle is 60. One is 3 meter, one is 1.5, one is making an angle of 30 degree, another is of 60 degree. So now what should be the length of a slide in this? We need to find out the length of slide. So here first, let the length of slide for the children below 5 years, let's take it equals to x. मान लेते हैं ये जो slide है वो कितनी होगी हमारी x मीटर होगी, right? Now this one, another one for the elder we consider it equal to y. Now for the first slide the height is given 1.5, another one it's given here 3 meter. Now for the small children we know in a right angle triangle ABC we have here observe angle C is 30 degree perpendicular divided by hypotenuse, right? अपोजिट साइड एंगल के अपोजिट साइड है साथ में हाइपोटेन्यूज है तो हमने क्या लगाना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेना है तो इसलिए हम साइन लगाएंगे. साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC. साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी इट्स हियर 1/2 AB वैल्यू it's given 1.5. AC it is here unknown. हमें फाइंड करना है तो x मान लेते हैं. x क्रॉस मल्टीप्लाई करो x comes equals to 1.5 into 2 which is equals to 3 meter, right? Now for elder children in triangle PQR हमने कंसिडर किया ट्रायंगल PQR को. ऑब्जर्व एंगल R here it's 60 degree. So for R अपोजिट साइड कितना होगा 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज कितना होगा y. तो रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज sin थीटा.
साइन 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर पी क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर। साइन 60 की वैल्यू हमारी पास होती है, इट्स हियर √3/2, पी क्यू इट्स हियर 3 and PR that is here y, right? Now cross multiply, √3y equal to 3 to the 6, right? √3y equals to 3 to the 6 by √3, √3 से multiply, √3 से divide, 6 by √3 into √3, 6 √3 divided by 3, cancel out करते हैं, ये आएगा 2√3, right? y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी, 2√3. Now √3 we know 1.73, multiply 2 into 1.73 that is equal to 3.46, right? Now next is the angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower, it is 30 degree. Find the height of a tower. What is given here, the angle of elevation of top of tower means आप यहाँ पर नीचे खड़े हैं, we consider it ourselves as a point object. Now angle of elevation from this, it is here from the top of tower, that is 30 डिग्री, राइट? ये पॉइंट कंसिडर किया और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद द ग्राउंड, राइट? इट इज 30 मीटर अवे, जो टावर है वो पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 30. नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन इट इज 30, सो वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ टावर, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है. सो दिस इज द फिगर. दोबारा देखो, ये हमने पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट से टावर को देखा और टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 30 डिग्री. पॉइंट से टावर मतलब पर्सन से जो टावर है वो कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर. तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, लेट कंसिडर करते हैं हाइट ऑफ पोल को कंसिडर करते हैं h, राइट? नाउ हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, अपोजिट साइड हमें फाइंड आउट करनी है तो ए बी मान लेते हैं. एडजेसेंट साइड हमारी क्या है, 30, राइट? एंगल के बिल्कुल साथ में जो साइड होती है उसको बोलते हैं एडजेसेंट. परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें याद दिखाता है किसकी, tan की, या आप कह सकते हो एडजेसेंट साइड. एक जो एंगल के साथ होती है वो एडजेसेंट साइड, सामने वाली होती है अपोजिट, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट याद दिलाते हैं हमें टेंजेंट. टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाय बी सी, राइट? नाउ tan 30 we have here 1 by √3, AB की वैल्यू गिवन है h, BC की वैल्यू इट्स गिवन है 30, यहाँ से 30 को इधर लेके जाते हैं, √3h इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 30, h की वैल्यू होगी 30 डिवाइड बाय √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, राइट बेटा? यहाँ से 30 इंटू √3 डिवाइड बाय होगा 3, √3 कितना होता है, 3, 3 से 30 को कैंसिल आउट करते हैं, 10√3. h हाइट आपके पास आ गई 10√3, √3 की वैल्यू है 1.73, यहाँ से h इज इक्वल टू 10 इंटू 1.73 को मल्टीप्लाई किया, इट्स 17.3. हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 17.3. क्वेश्चन इज अ tree break due to storm and the broken part bend so that the top of tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. So this is a tree. It's break due to storm. Right? Broken part like this. It break and it bends so that the top of tree touch the ground and make an angle of 30 degree. Right? The distance between the foot of tower to the top, it is 8 meter. This is foot of tree and this is top, making an angle of 8 meter. Find the height of a tree. Total height निकालनी थी, right? So here BC equal to CD. जो ये गिरा है यही तो नीचे वाला पोर्शन है, right? Now this is the figure. We need to find out this BC and here AC, right? So observe AB. AB is made up of AC and BC, and here we first find out AC. So in this triangle ACD, observe angle D that is equal to 30 degree. Opposite side it is
we need to find out the height, means opposite side is needed. And here base is given, adjacent side. So opposite by adjacent, we know it is equals to tan. So the ratio is tan theta. Tan 30 degree is equal to AC divided by AD. Here tan 30 value, it is equals to 1 by root 3. AC as it is, AD it's 8. Now AC we are finding here, it is equals to 8 by root 3. Now AB it equal to AC plus BC. AC तो हमने फाइंड आउट किया, अब किसको फाइंड आउट करेंगे? BC को. We know BC equal to CD. So this portion and this portion. So if you find out the CD, easily you can find out BC also. That will be same. Now here consider triangle CAD. In this observed angle D, that is 30 degree. We have a triangle with the adjacent side and we have a hypotenuse here. So adjacent with the hypotenuse, it will give you cos. You can say base by hypotenuse also. Base ये है, hypotenuse ये है, तो it means क्या बनेगा? Cos. Cos of 30 degree, it is equal to AD divided by CD. Cos 30 की वैल्यू यहाँ से √3/2. AD हमने as it is पुट किया 8. CD की वैल्यू आपके पास है as it is, right? You can put BC also. So BC comes equals to √3. BC is equal to 16. BC की वैल्यू आ गई 16 by √3. √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और यू कैन फाइंड आउट फर्स्ट हाइट ऑफ ट्री. दोनों को ऐड करते हैं, 8 by √3 प्लस 16 by √3. ऐड किया, आपके पास आ गया 24 by √3, राइट? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और ये आपके पास आ गया 24 √3/3. इट्स आंसर इज 8 √3. क्लियर? Okay, value we put and the answer comes equal to 13.84, right? Now question is, from a point on a ground, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at a point of top of 20-meter high building are 45 and 16. Understand? From a point on a ground, angle of elevation of the bottom and top of a tower fixed at this. So first of all, bottom and top of transmission tower. This is transmission tower, right? Fixed at, this is bottom of tower and this is top of tower. Now this is fixed at a top of 20-meter building, right? They are making an angle of 45 degree and 60 degree. So observer, height we neglected, point, line of sight. पहले बॉटम को देखते हैं, तो एंगल कितना गिवन है हमें? 45. फिर हमने देखा टॉप को, तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, राइट? हमें ये फाइंड आउट करना है. सो कंसिडर दिस फिगर नाउ हियर. नाउ दिस AB, it represents the height of tower which is equal to 20 meter. In this we need to find out the height of a tower. Building we consider 20. ये गिवन था तो हमने 20 ले लिया. BC को हमने माना x मीटर. BC is a part of AC, right? So here BC we can write AC minus AB. To find AC, first we need to find out AD. Now consider this triangle. What point we can take here? In each and every question we take the triangles. आपको जो भी triangle given है ना, उस triangle को लेके चलना, ठीक है? तो आपको easily वो आंसर मिलेंगे. तो फर्स्ट टू टेक ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है, ध्यान रखना. तो ट्रायंगल का नाम क्या है? BAD. In BAD we have here angle D which is equal to 45 degree. 45 अपोजिट क्या होता है हमारा? AB, और एडजेसेंट क्या है? AD. तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा. tan 45 का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर AB by AD. tan 45 है 1. 1 equal to AB by AD, 20 by AD. AD की वैल्यू आ गई 20. Let us find out AC now. Now total, that is 20 plus x, right? AC is equal to AB plus BC, it equals to x. Now here let's take this complete triangle CAD. It is angle D, observe angle D which is equals to
60 degree, complete angle, right? So now CDA, we have opposite side AC and adjacent side, it's AD. Opposite by adjacent, हमें पता है क्या होता है, tan theta. Tan 60 का फॉर्मूला AC by AD, tan 60 की वैल्यू √3 AC, it is given here 20 plus x, AD, it is given here 20. Let's multiply 20 into √3 equal to 20 plus x. Now x comes equal to 20 √3 minus 20. 20 को कॉमन लेते हैं, √3 minus 1, आंसर आ गया 20. √3 की वैल्यू आप पुट करो 1.73 minus 1. 1.73 में से 1 को हमने माइनस कर दिया और ये आ गया 20 into 0.73, इट इज इक्वल टू 14.6. तो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर हमने निकाला किसके इक्वल, 14.6 मीटर. Got it, students? Okay. Now next question in front of you, that is a statue 1.6 meter tall. हमें क्या गिवन है, स्टैचू गिवन है और उसकी हाइट गिवन है, कितनी है, 1.6. stand on the top of a pedestal. This is statue. stand on the top of a pedestal. किसके ऊपर है, किसी pedestal के ऊपर. from a point on the ground. This is the point on the ground. The top of statue is angle of elevation of the top of statue. This top, it is here 60 degree, right? From the same point, angle of elevation of top of pedestal. Where is top of pedestal? Here. And this angle is now 45 degree, right? Okay. So this is the figure which we got. We need to find out the height of a pedestal. हमें क्या find out करना है, height of pedestal find out. Clear, students? Now here, this is A, B, C, D. We have here this figure. So in this, we find easily the height of a pedestal. So for this, let's consider it equal to h, right? Height of statue, it is given to us. कितना given है? It is here 1.6. Now AD, that is equals to x. मान लेते हैं AD की वैल्यू कितनी है, x, right? Here, take a triangle BAD. हमने एक ट्रायंगल ली और ट्रायंगल का नाम क्या रख दिया, BAD. Observe angle D. From here, BDA opposite side divided by adjacent side. देखो, आपको फाइंड आउट करनी है हाइट और उसके लिए बॉटम तो जरूरी पड़ेगा, है ना, जरूरत पड़ेगी उसकी. तो परपेंडिकुलर और साथ में क्या ले रहे हैं, बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस क्या देता है हमें, टेंजेंट. tan 45 का फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय AD. tan 45 होता है 1 इक्वल टू AB डिवाइड बाय AD, राइट स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कंसिडर h. AD की वैल्यू हम मान लेते हैं x. h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x. In right angle triangle CAD, take a triangle CAD. We have here D, CDA, opposite side, it's given here AC, opposite side is AD. Now, this is ratio of opposite by adjacent, tan theta. tan 60 की वैल्यू निकालते हैं, परपेंडिकुलर AC, बेस क्या है, AD. tan 60 क्या होता है, it is √3. √3 comes equals to AC 1.6 plus h, right? AD, it's here x. So now √3x equal to h plus 1.6. But h की वैल्यू तो x के इक्वल है, x की वैल्यू h के इक्वल है, तो x की जगह h पुट कर देते हैं, h plus 1.6. Now take this √3h minus h equal to 1.6. √3h में से h माइनस करते हैं, h कॉमन लेते हैं, तो √3 minus 1 equal to 1.6. h की वैल्यू आपके पास आ गई 1.6 बाय √3 minus 1. कोई भी वैल्यू रूट नीचे नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती, तो मल्टीप्लाई बाय √3 plus h and divide by √3 plus h, right? Now 1.6 into √3 plus 1 divide by √3 whole square minus 1 whole square, a square minus b square का फॉर्मूला लगाएंगे. 1.6 into √3
plus 1 divide by root 3 का square 3 minus 1. 1.6 into root 3 plus 1 डिवाइड किया कितना आ गया 2 0.8 0.8 into root 3 plus 1 राइट स्टूडेंट्स और वैल्यू पुट करते हैं रूट 3 की 1.73 plus 1 it is equals to 2.73 multiply the value comes equals to 2.184 right now next is angle of elevation of a top of building from a foot of tower that is given हमें given है क्या given है it's given here the value is 30 degree so first is angle of elevation आपके पास क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर पे ठीक है कितना है 30 डिग्री सो दिस इज स्टार एंड दिस इज आवर बिल्डिंग इसको मान लेते हैं एक बिल्डिंग है और एक क्या है टॉप ऑफ टावर है ठीक है नाउ हियर टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ टावर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं कितना है 30 डिग्री इट इज हियर 30 डिग्री नाउ नेक्स्ट इज angle of elevation of top of tower from foot of building this is foot of building to the top of tower that is 60 degree if the tower height is given it is here 30 meter height ये given है 30 meter right now find the height of building आपको क्या करना है बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है right so this is the figure which we got here from here how to find it AB represent the height of tower 30 meter CD represent the height of building that is we need to find out one angle it's given here so first of all we consider a triangle ABC observe angle C which is here 60 degree now opposite side it's 30 adjacent side we need to find out it's the ratio it's tan 60 perpendicular by base tan 60 value it is here root 3 AB it's 30 BC we need to find BC comes equal to 30 by 3 30 by root 3 से multiply root 3 से divide 30 root 3 by 3 आंसर आ गया 10 root 3 now consider triangle DBC here in triangle DBC we have here opposite side DC adjacent side BC so opposite by adjacent that will give you again tan 30 perpendicular by base tan 30 की वैल्यू 1 by root 3 DC आपके पास as it is BC की वैल्यू कितनी आएगी 10 root 3 10 root 3 divided by root 3 cancel आंसर कितना आ गया 10 meter right now height of building comes out equal to 10 now next question in front of you that is two poles of equal height हमें क्या गिवन है दो पोल गिवन है दो पोल जिनकी हाइट क्या है हमें गिवन है कि वो क्या है इक्वल है right these are the two poles they are of equal height they are on the either side of the road which is 80 meter wide right these are two poles road that is 80 meter from a point between them on the road it's not written here that it is the mid of it mid में given नहीं है right तो आपको ध्यान रखना है anywhere it can be possible the angle of elevation it's one is 60 degree and other that is 30 degree एक 60 degree angle of elevation है एक 30 degree है find the height of a pole and the distance of a pole height of pole निकालनी है ठीक है और क्या निकालना है distance of point from the pole कितना distance है one this one another this one so this is the figure which we got ABE and DEC now in this height of pole we consider equal to h meter we need to find out AC width of road that is 80 meter here let the distance of a point E from the pole it's equal to x another one EC also we consider it equals to y x plus y equal to 80 if one is x other will be 80 minus x right now
In this, we have a triangle BAE. Perpendicular we have, base we have, so we apply tan 30, right? Tan 30 comes out equal to perpendicular AB divided by base AE. Tan 30 की वैल्यू आपके पास आएगी 1/√3, AB H, base is X, H comes equals to X/√3. Yeah, X comes equals to H√3, right? Now, take the another triangle DCE. It's perpendicular. Perpendicular की वैल्यू है H, बेस की वैल्यू क्या गिवन है 80 माइनस एक्स, तो परपेंडिकुलर और बेस मिलाकर क्या बनेगा आपका tan ही बनेगा, राइट? तो tan 60 आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस h डिवाइड बाय x 80 माइनस एक्स, राइट? क्लियर? नाउ x की वैल्यू पुट कर देते हैं 80 माइनस एक्स इक्वल टू h, x पुट करेंगे तो आपके पास आएगा √3 80 माइनस √3h, राइट? h comes equals to 80√3 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 3h, h को h के पास भेजते हैं, h plus 3h equal to 80√3, 4h equal to 80√3, h comes equal to 80/4, कैंसिल किया 20√3, आंसर कितना आ गया 20√3, √3 की वैल्यू पुट करी 1.73 और आपके पास आंसर आ गया 34.6. Now we need to find out here AE which is equals to x. x की वैल्यू है √3h, h की वैल्यू है 20√3, यहां से आपने मल्टीप्लाई किया 20 इंटू 3 किसके इक्वल आ गया 60. EC की वैल्यू है 80 माइनस एक्स, x गिवन है 60, 80 में से x 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 20. तो हाइट ऑफ पोल हमने फाइंड आउट करी किसके इक्वल है 20 के इक्वल, राइट? 34.6, सॉरी, right? Now we have a next question. A TV tower stand vertically on a bank of a canal, right? This is from a point on other bank directly opposite to the tower. Here the angle of elevation of a top of tower is 60. Here it angle elevate and angle is 60 degree. From another point 20 meter away, from this point, line joining this point to the foot of tower, angle of elevation is 30 degree, right? It is away from it, how much 20 meter, and now the angle of elevation is 30. So we need to find it. अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है पोल की हाइट, टावर की हाइट और विड्थ ऑफ द कैनाल. सो हाइट ऑफ अ टावर कंसीडर कर लेते हैं, कितना होगा h होगा, राइट? नाउ this BC we consider x. Now this is 20 meter. Consider triangle ABC, perpendicular divided by base. Tan 60, perpendicular is AB, base is BC. Tan 60 की वैल्यू √3, √3 comes equals to AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू है x. h is equal to किसके इक्वल आ गया √3x. Now consider triangle ABD. Observe angle D which is 30 degree, right? Perpendicular by base दोबारा लगाएंगे, tan ही लगेगा. Tan of 30 degree, perpendicular is AB, base is BD. Tan 30 की वैल्यू आपके पास है 1/√3. Keep it as it is. AB की वैल्यू है आपके पास h और BD की वैल्यू आपके पास है 20 plus x, right? Now here cross multiply. X plus 20 equal to h√3, x plus 20 equal to h की वैल्यू पुट करते हैं √3x into √3. Now x plus 20 equal to 3x, 20 equal to 3x minus x which is 2x, x equal to 20/2, that equals to 10 meter. Now h comes equals to √3 into x, x की वैल्यू पुट करी हमने 10, आंसर आ गया 10√3. Value of h is equals to tan √3. √3 is equal to 1.73. Put here 17.3. तो width of canal आपके पास आता है 10 और height of tower क्या है 17.3. So with this I am ending the lecture. Now after this we will continue the next lecture in the next video. Thank you. Bye bye.